Dear friends, have a nice day. Friends, आपका दिन शुभ हो and I hope that you are safe at home. I have already taught you what is resistance, the property of a conductor to oppose the flow of the current is called resistance. किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं एंड today I am going to explain the factors affecting the resistance. So, what are the factors which affect the resistance? Factors affecting the resistance. The factors, important factors which affect the resistance, there are three factors which affect the resistance. तीन फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. Three factors which affect the resistance. The resistance of a conductor depend on its length. लेंथ पे डिपेंड करता है. On its area of क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. एंड थर्ड इज द रेजिस्टेंस डिपेंड on the nature of the material. Nature of the material. So resistance depend करता है on the nature of its material. These are the three factors. रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है. These are the three factors on which resistance depend. Resistance of uniform metallic conductor is directly proportional to the length. जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का किसी वायर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द मीनिंग ऑफ directly proportional. What is the meaning of directly proportional? So the meaning of directly proportional, suppose resistance is length of conductor is 2 meter and resistance is 1 ohm. Now the length of conductor become 2 ohm, 2 meter, sorry, 3 meter, 4 meter suppose, 2 times. Then resistance become
2 ohm. If the length of conductor become 6 meter, then resistance become 3 ohm. If length of conductor becomes 8 meter, then resistance become 4 ohm. So the meaning of this, what is the meaning of this? The meaning of this is when the length of conductor is doubled, the resistance also doubled. When length of conductor become 3 times, the resistance becomes 3 times. When the length of conductor becomes 4 times, the resistance becomes 4 times. This is the meaning of the directly proportional. So resistance is directly proportional. Means जब length of conductor double होगी तो resistance भी double हो जाएगा. Second है, what is the meaning of inversely proportional? Inversely proportions, let area is to area becomes 2 times, then resistance becomes 1/2 times. Length area becomes 3 times. Area becomes 3 times. Area 3 times. Then resistance becomes 1/3 times. Let area becomes 4 times. Then resistance becomes 1/4 times. This is the meaning the inversely proportional. यानी 2 का इन्वर्स हाफ हो गया, 3 का इन्वर्स 1/3 हो गया, 4 का इन्वर्स 1/4 हो गया. तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इससे ये दिखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसकी मोटाई या उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. ठीक है. नाउ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, and resistance is inversely proportional to the area of cross section. And here we get a formula, R is equal to rho L upon A. Rho जो है वो है resistivity, it is the constant of proportionality. जब हम ये proportional को equal में change करते हैं तो एक constant लगाते हैं. यहाँ पे ये rho constant है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका ये है इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी. तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर? दैट वी विल डिफाइन जस्ट आफ्टर. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल आल्सो. किस मैटर का रेजिस्टेंस कंडक्टर बना है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. सो प्योर मेटल है या एलाइज का कंडक्टर है, कंडक्टर जो है एलाइज का है या प्योर मेटल का है. जो एलाइज होते हैं, एलाइज ऑफर मोर रेजिस्टेंस देन द प्योर मेटल. इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस, जो हीटिंग अप्लायंस हैं लाइक इलेक्ट्रिक गीज़र है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, इनके जो अलाइज होते हैं वो इनके एलिमेंट जो होते हैं वो अलाइज के बने होते हैं लाइक नाइक्रोम के. क्योंकि नाइक्रोम जो अलाइज है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है
और उसके बाद उसके साथ साथ ये रस्ट भी नहीं करता है। कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, वाई द द एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेज आर मेड अप ऑफ alloys like nichrome. The answer is the elements of heating appliances are made up of alloys like nichrome because it offers high resistance, so it produces more heat and it does not rust. That is that. Up resistivity. What is the resistivity? Resistivity is defined as the resistance offered by a cube of matter sorry by a cube of matter of side 1 meter when current flow perpendicular to the opposite side 1 meter, sorry, here side 1 meter. So resistivity is resistance offered by a cube of matter of side 1 meter when current flows perpendicular to the opposite phase. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये अब इसका क्या मतलब हुआ रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ अगर हम किसी भी मटेरियल का 1 क्यूबिक मीटर जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। सिंपल डेफिनेशन है, आप याद करिए सिंपल वे में। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मैटर ऑफ साइड 1 मीटर is called the resistivity. जो मेटल्स होते हैं और एलाइज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है बमुकाबले नॉन मेटल्स के, और जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे रबर है, गिलास है, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो एलाइज हैं और मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। और एलाइज की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी के मुकाबले में। ये I have given some data of the resistivity, you can see here. Okay, and from the book you can see the data of resistivity. Now what we have learned? We have learned there are the three important factors which affect the resistivity. Length of the conductor, resistivity is directly proportional to the length of the conductor, and area of cross section or thickness, the resistance of any conductor is inversely proportional to the area of cross section. Then the nature of the material. Alloys offers more resistance than the pure metal. Or one more factor, the temperature. Actually, the resistance of pure metal increases with the increase in temperature. This is we learn here. And then there are two important factors also, points we learn here, two important points. एक point ये है कि the elements of heating appliances are made up of
alloys like nichrome, because nichrome has the high resistance, so it produces more heat and it does not rust. और second हमने सीखा कि the lead wires of the heating appliances are made up of thick wire, because thick wire offers less resistance and so it does not heat up and also does not melt. This we learn total in this topic. Thank you.